Hello students, again I am here to explain you the difference between prime numbers and composite numbers. This topic is very important and will help you in a long run. So now only your concept should be clear. The base should be clear. Now see, as I have written, as you can see on the board, what are prime numbers and what are composite numbers. See, what are prime numbers now? Prime numbers, this NOS means here numbers. Numbers which have only two factors. In the last video, I have already explained what are factors and what are multiples. I think you know the meaning of the factors. Now let me once. I think you have watched that video in which I have explained the difference between factors and multiples. If you have not watched, you should watch before understanding this topic. So let's once for 1 minute I'll give you in making you understand the meaning of factors. Factors means what? Suppose I want to write the factors of 2. Suppose 1 I am leaving 2. So if I have to write down the factors of 2 means 2 comes in the table of which numbers you have to write. So 2 comes in the table. You know factors always start with 1 and end with itself. So 2 is coming in the table of 1, 2 comes in the table of 2. So 2 has 2 factors. So this is factor. So now what are prime numbers? Numbers which have only 2 factors, 1 and itself. The one itself means the number itself. When I'll explain you giving examples, then you will understand better. Now, I'm going to explain you the prime numbers found between 1 to 10. As I've already written 1 to 10, let us write the factors of these numbers. So what are the factors of 1? 1 has only one factor, that is 1. Means 1 comes in the table of 1 only. 2 has 2 factors, 1 and 2. Means 2 किस के table में आता है? 1 and 2. And now 3 comes in the table of 1 and 3. It has also 2 factors. Now 4 has how many factors? 4 comes in the table of 1, 2 and 4. So 4 has 3 factors. Now 5. First I'll write write the factors of these numbers, then I'll tell you which numbers are prime numbers. Now 5. Factors of 5 are 1 and 5. Factors of 6 are 1, 2, 3, 6. Factors of 7 are 1 and 7. Factors of 8 means 8 comes in the table of 1, 2, 4, 8. Factors of 9, 1, 3, 9. And factors of 10, 1, 2, 5, 10. So now I have written the factors of all the numbers. Now you have to find out from 1 to 10 which numbers are prime numbers. According to the definitions, जिसके 2 factors हैं वही numbers prime numbers हैं. अब देखो किसके 2 factors हैं? 2 के 2 factor हैं, सिर्फ 1 और 2, तो this is a prime number. 3 इसके भी 2 ही factor हैं, तो this is also prime number. 4 के अब now 1 has only one factor. 1 has only one factor, so this is not prime number. This is not a prime number. Come to 4. 4 has 3 factors. 4 के 3 factors है, 1, 2 and 4, so this is not a prime number. 5 has also 2 factors. इसके भी 2 factors हैं, 5, so this is also prime number. 6 के 4 factors हैं, 7 के भी 2 ही factor हैं, तो this is also a prime number. I am circling the prime numbers, okay? Now 8 has 4 factors, 9 has 3 factors, 10 has 4 factors. So these are also not prime numbers. So the numbers which are having more than 2 factors, they are now composite numbers. Now let me explain you what are composite numbers. Did you understand? So which are the prime numbers between 1 to 10? 2, 3, 5 and 7. So these four are prime numbers between 1 to 10. That is 1 digit. These are the 1 digit numbers which are prime numbers between 1 to 10. Fine? And 1 is, most of the time it comes in exam.
which number is neither prime nor composite? So you will write, wait. Now composite numbers. Now what are composite numbers? Composite numbers are just the reverse of prime numbers. Now here prime numbers have only 2 factors. यहाँ prime number के सिर्फ 2 factors हैं. अब ना composite numbers have more than 2 factors. Composite number के more than 2 factors से ज़्यादा factors होते हैं. तो let me see. अब यहाँ पे देखो 1 तो neither 1 इसके कितने factors हैं? सिर्फ 1. तो इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ना इसके 2 फैक्टर है ना 2 से ज्यादा, इसके सिर्फ 1 फैक्टर है. तो व्हाट यू राइट? 1 इज नाइदर प्राइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट. ऐसा क्यों है? बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर. इसका सिर्फ 1 फैक्टर है. Now, but what are composite numbers which have more than 2 factors? जिसके 2 factors से 2 से ज़्यादा factors है. अब आओ यहाँ, तो 2, 3 are prime numbers. अब जो बच गए वो composite number. देखो कैसे. अब 4 के कितने factors हैं? 2 से ज़्यादा है, 3 factors है, तो 4 is a composite number. 6 के भी 4 factors है, 1, 2, 3, 6, तो 6 is also a composite number. 8 के कितने factors है? 1, 2, 4, 8, तो 8 is also a composite number. 9 के भी 3 factors हैं, तो 9 भी composite और 10 भी composite. Okay? So, if it will be asked, now, you understood difference between prime numbers and composite number? एक बार और जल्दी से मैं समझा दे रही हूँ. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके 2 फैक्टर्स हैं. जब तुम सपोज 18 किसी ने पूछा तुम्हें 18 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो तुम क्या करोगे? पहले 18 के फैक्टर. सपोज एनीबडी आस्क यू कि 18 प्राइम नंबर है या नहीं, या फिर 11 प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे पता करोगे तुम लोग 18 प्राइम नंबर है या नहीं? तो फर्स्ट यू राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18. सारे फैक्टर्स लिखो 18 के. तो यू नो फैक्टर स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड विथ इटसेल्फ. तो 1 के टेबल में 18 आता है, 2, 3, 6, 9, 18. अब इन द लास्ट वीडियो फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू कैसे तुम लोग देखोगे कि तुमने सारे फैक्टर्स लिखा है या नहीं. तुम पेयर करो. तो पेयर, आई वांट टू सी वेदर आई हैव रिटन ऑल द फैक्टर्स और नॉट. 1 into 18 is 18, 2 into 9 is 18, 3, 6 is 18. Yes, I have written all the factors. अब 11. तो 18 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब 11 का लिखो. इज इट 11? यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. तो 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 11. 11 सिर्फ 1 के टेबल में, 1 and itself. itself मीन्स खुद के टेबल में जाता है. तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं इसके, 1 and itself. तो 11 is a prime number. So few question arises. So now once you understood the difference between prime numbers and composite number, now I've explained you how will you know whether the given number is a prime number or composite number. Now you have understood. Now tell me, write in the chat box स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल बी ऑफ 1 डिजिट. कहीं से भी नहीं उठा लोगे, स्टार्टिंग से सोचो. 1 प्राइम नंबर नहीं है. 2, यस इट इज अ प्राइम नंबर. तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है. अब लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर. मेरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, 1 डिजिट. आई एम नॉट आस्किंग 2 डिजिट 3 डिजिट. आई एम आस्किंग लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर. तो 1 डिजिट प्राइम, लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर इज विच वन? अब देखो सबसे बड़ा 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 7. तो राइट हियर 7. ठीक है. नाउ कम टू स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. अब देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्टार्टिंग से देखोगे व्हेनेवर इट विल बी आस्क्ड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 1 से स्टार्ट करोगे देखना. ओके, कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर दोगे. तो 1 नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 2 तो प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. अब लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे बड़ा 1 लार्जेस्ट
1 digit composite number. तो लार्जेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर विल बी 9, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट हो गया, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर 9. ओके, now the topic which I am taking to explain, be very attentive and understand, because children most of the time get confused between co-prime numbers and prime numbers. Though I have explained prime numbers, but again I have written so that I can differentiate, I can distinguish between the two and make it clear to you the difference. Okay? Now what are co-prime numbers? As prime word is common between these two words, so you get confused. Now see first, what are prime numbers? You know, numbers which have only two factors, one in itself. A single number will be given and you have to find out whether the given number is prime number or not. I have explained you. Now co-prime numbers क्या है? Co-prime numbers, two different numbers. When a pair of number will be given, जब दो नंबर दिया रहेगा, which have दो नंबर दिया रहेगा, जब तुम उसके factors लिखोगे, तो its common factor will only be 1. That means it is a co-prime number. Once again I am explaining. Two different numbers which have only one as common factor, common factors if one हो, then only the given pair is co-prime. चलो example number 1, are 12 and 25 co-prime numbers? मुझे प्रूफ करना है, are 12 and 25 co-prime number? क्या ये पेयर co-prime है? तो first what will you do? What is the definition? One common factor होना चाहिए. तो पहले तुम दोनों numbers के factors लिखो. तो 12 के factors क्या होते हैं बताओ? Write in the chat box. Now 12 के factors हैं. As I told you, factors हमेशा 1 से start करो और itself से end कर दो, ठीक है? चलो 1, 2 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में, 4, then 6, then 12, ठीक है? अब पेयर करके देख लो whether you have written all the factors or not. Pair it. 1 into 12 is 12. 25 के factors लिखो. 1, 5, 25. ओके? Now अब कौन से कॉमन फैक्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं? सिर्फ 1 और कोई कॉमन नहीं है, only 1 is common. Means this given pair is, yes, 12 and 25 are co-prime numbers. लेकिन prime numbers में क्या होता है? Only one number is given. For example 12. अब पता करना है whether it is prime or not. तो लिखोगे factors 1, 2, 3, 4, इतने सारे factors हैं, that means it is not prime. अब 13 के सिर्फ 2 factor हैं, means it is prime. So, understood children? I think you all have understood. Now, if you like the video, then subscribe my channel and share the video with your friends. Okay?